अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। आए पढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को। लेट अस कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स, वन इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड while the other one is negatively charged। दोनों किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड है। Q प्लस इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के दरमियान जो है ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एग्जिस्ट करती है, ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एग्जिस्ट करती है। तो आए लेक्चर नोट करते हैं। लेट अस कंसीडर टू प्लेट्स positively charged and negatively charged. The density, charge density is given by rho is equal to Q over charge per unit area is known as electric density, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाय coulombs by gauzes। Post applications, we know that the electric intensity up to plates E is equal to rho upon epsilon naught, and the potential difference between two plates is given by, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू D। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे साथ है रो इंटू डी, V इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब हम मज़ीद जानते हैं कि रो इज इक्वल टू Q अपॉन A। रो मज़ीद हम इसकी वैल्यू जानते हैं, V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। According to an equation of capacitance, Q is equal to CV and V is equal to Q upon C। अब हम Q upon C और इसको कंपेयर करते हैं। by comparing Q upon C is equal to Q upon A epsilon naught into D। Q के साथ कैंसल आउट हो गए, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इज इक्वल टू वी। अच्छा, क्यू के साथ कैंसल आउट हो गया। 1/c को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो c बन जाते, ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। रिस्पेक्टेड ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।